Good morning, students. Today I am going to discuss the new chapter, that is chemical kinetics. Now, the first question is, what is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the speed of a chemical reaction and the step by changes that reactants undergo in their conversion to product. Or in simple way you can say that chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the speed of a chemical reaction. You can simply say it is the branch of chemistry which deals with the speed or the rate of a chemical reaction. That is the rate of change of concentration of reactants or the rate of change of concentration of the product. Now, as you know, for a chemical reaction to occur, the delta G, that is change in Gibbs energy, it should be negative, that is it should be less than 0, and the entropy change should be positive, that is greater than 0. Now, depending on the rate, depending on the speed of the reaction, a chemical reaction is classified in 3 categories. Categories number 1 is your very fast reaction. जैसा कि आपको नाम ही कह रहा है कि भाई वो रिएक्शन जो काफी फास्ट हो, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत तेजी से हो जाए, वेरी फास्ट रिएक्शन. द एग्जांपल इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl. इट विल गिव ए white precipitate of your silver chloride and sodium nitrate. आपने जब क्लोराइड का टेस्ट किया होगा, then you must have observed कि in chloride solution as you have silver nitrate solution, you will get a white precipitate of AgCl. ठीक है, तो ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है, वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस. द सेकेंड इज योर वेरी स्लो रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको बाहर छोड़ दीजिए. अब देखिएगा, कल आप देखिएगा ना तो उसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन 10 दिन छोड़ दीजिए, 1 महीना छोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा उसमें रस्ट पकड़ लेता है. So rusting of iron is a slow reaction, very slow reaction. The other example is fermentation of sugar to alcohol. Sugar बहुत जल्दी ferment नहीं करता, but which will take a last time. Photosynthesis, it is also a very slow reaction, but moderately slow. बीच में जो है, जो ना तो very fast है, ना ही very slow है, that is called moderately slow. The example is your hydrolysis of sucrose. The example is your hydrolysis of sucrose, because this is your sucrose. Sucrose, when hydrolyzed by water, it will give you glucose and fructose. So it is your moderately slow reaction. तो जो हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बेहतर होता है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन के केस में, कि जिसका रेट हम आसानी से निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन, और व्हाट एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन स्टैंड्स फॉर. So next is your rate of a chemical reaction. Rate of a chemical reaction. Note down, please note down. The rate of a chemical reaction. The rate of a chemical reaction is the speed or velocity
at which a reaction takes place, at which a reaction takes place. कहने का मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, जिस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई रिएक्शन होता है. It may be expressed in either of the ways. ये किसी एक तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, the rate of decrease of concentration per unit time, or it may be in terms of the rate of increase of concentration of product per unit टाइम. तो डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन जहां लिखे हैं वहां एक वर्ड जोड़ दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप कोई एक रिएक्शन लिखते हैं, R gives P, where R is your reactant and P is your product. अब सोचिए जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जब रिएक्शन होगा तो आप कहेंगे कि इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा. क्यों घटेगा? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? बिकॉज योर रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. So the rate of a chemical reaction may be given in terms of the decrease in concentration of reactant, or it may be given in terms of the rate of increase in the concentration of the product. क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा. For example, if we consider at time t1, concentration of reactant is your R1. t1 समय पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 and at time t2 the concentration of reactant is your R2. मान लीजिए कि ये इनिशियल टाइम है, वो फाइनल टाइम है. ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया तो वो फाइनल कंसंट्रेशन. So what is change in time? You can say change in time is your T2 minus T1, that is delta T. So what is your change in time? Delta T, that is T2 minus T1. And what is your change in concentration of reactant? Change in concentration of reactant is your simply R2 minus R1. That is you can say delta R. क्योंकि आप जानते हो कि जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते थे
डेल्टा R2 सॉरी ब्रैकेट R2 माइनस ब्रैकेट R1। ये ब्रैकेट कहने का मतलब हो गया कंसंट्रेशन R2 कंसंट्रेशन R1, दिस इज योर सिंपली डेल्टा R, डेल्टा फॉर चेंज, डेल्टा फॉर चेंज। ठीक इसी तरह से तो जब आप इसकी बात कर रहे हो, तो जब आप इसकी बात आपने कर दी, तो अब आप बताइए कि व्हाट इज योर रेट। आप कह रहे हो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आप कह रहे हो कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है मेरा, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम और यूनिट टाइम। अगर आप इसको R बोलते हो सपोज करो, तो दिस R इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा R बाई डेल्टा T। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट के केस में ले लो, कि प्रोडक्ट के केस में आप ले सकते थे कि सर टाइम T1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको हमने कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये सर R1 ना होकर के मान लीजिए T1 हो गया। नाउ ये T2 है कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ प्रोडक्ट कर दीजिए, ये R2 ना होकर के ये T2 हो जाए। तो जहां कंसंट्रेशन था वहां हमने प्रोडक्ट को ले लिया, तो अब यहाँ रिएक्टेंट ना लेकर के कंसंट्रेशन ऑफ यदि प्रोडक्ट ले लें तो P2 माइनस P1 हो जाए, ये आपको P2 माइनस P1 हो जाए। एंड दिस P2 माइनस P1, दिस P2 माइनस P1, दिस इज योर डेल्टा P। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू योर डेल्टा P बाई डेल्टा T। लेकिन दोनों में एक फर्क है, दोनों में एक फर्क है। फर्क ये है आपका, और वो फर्क बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फर्क ये है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। अगर मान लीजिए यदि आप सोचिए, यदि आप इनिशियल R1 यदि 100 ग्राम लिए हुए थे सपोज करिए, तो R2 आपका 80 ग्राम हो गया घट करके, तो आप कह सकते हैं कि सर तब तो डेल्टा R आपके नियम से हो गया 80 माइनस 100, यानी हो गया माइनस 20। बिल्कुल, जिसको हम लिख रहे हैं केवल शॉर्ट में 20 मैग्नीट्यूड में। दैट्स व्हाई R इज इक्वल टू माइनस एंड दिस इज इक्वल टू प्लस। माइनस और प्लस लिखने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, व्हाइल प्लस लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। तो आई होप आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे। थैंक यू।